हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगी आगे के स्टेप्स, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था फाउंडेशन कैसे लगाते हैं। बिकॉज मैनी ऑफ यू ऑल डोंट नो हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। तो वो वीडियो अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ गो अ वीडियो बैक एंड हैव अ लुक। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो देखना, बिकॉज उसमें दिखाऊंगी कि मैं फ्लॉलेस फाउंडेशन कैसे लगाते हैं। एंड उसके बाद नाउ after setting the foundation I am just going to apply a very little compact। आप देख सकते हो मैंने कॉम्पैक्ट लिया है और थोड़ा सा अपने चेहरे पे डस्ट किया है। मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, जस्ट टू सेट द फाउंडेशन सेट कर लूँ उतना ही कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। यस गाइस, ज़रूरी नहीं है जो मैं प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ वही आप लोग ख़रीद के ये लुक अचीव कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आप अपने ही प्रोडक्ट से ये लुक अचीव कर सकते हो, बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए। एंड नाउ फॉर द ब्लश आई एम गोइंग टू यूज़ दिस रेने लिपस्टिक। दिस इज़ 5-in-1 लिपस्टिक, ब्यूटिफुल शेड, अमेजिंग फार्मूला। एंड येस गाइज, मैंने इसके ऊपर एक रील बनाया था, बट इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं अपना लिंक कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो यू गाइज़ कैन फॉलो मी देयर, बिकॉज मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ एंड यू गाइज़ कैन एन्जॉय दोज। एंड यू ऑल कैन सी दैट ये लिपस्टिक अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। देर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज़ एन क्रीमी मैट फार्मूला विच इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड अगर आपको ब्लश कम पसंद है तो आप लोग कम लगा सकते हो, बट आई लव ब्लश। मुझे कुछ ना दिखे चेहरे पे बट ब्लश दिखना चाहिए। दैट इज़ लाइक ऑल टाइम लव फॉर मेकअप। एंड इसके बाद आप देख सकते हो दिस इज़ ब्लेंडिंग सो ब्यूटिफुली, एकदम अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। इट इज़ गिविंग मी एन ऑसम कलर ऑन माई चीक्स। एंड अभी एज इट इज़ एन बिगनर्स मेकअप आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम लिपस्टिक शेड ऑन माई आईज। कैन यू ऑल सी इट इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट tan orange kind of look, and this gives an beautiful color on your eyelid। बस उसको अच्छे से फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। Can you all see this? This color looks so amazing. It already has given me a nice eyeshadow look. It's been many a times that I have just carried a lipstick and a moisturizer with me and just any of my eyebrow product which I can't stay without. एंड बस मैं उसी से अपना आई शेडो कर लेती हूँ, अपना ब्लशर लगा लेती हूँ। एंड तो लिपस्टिक इज़ तो वेरी ऑब्वियस विद दैट, एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीट माई मेकअप लुक। एंड नाउ फॉर द आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स eyebrow powder, and this is like a very amazing stick. I don't know, मैंने बहुत पहले ये ख़रीदा था but I did not use it at all, and today I just saw it and I felt like using it ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। and you all can see that this fills your brows very naturally। इसको बहुत ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से फिल करोगे तभी अच्छे से फिल हो जाएगा। एंड यू ऑल कैन ऑलरेडी सी इट इज़ गिविंग मी अ नाइस नेचुरल डार्क ब्राउन eyebrows। And now I'm using the same Rene lipstick which I had used on my cheeks and on my eyes। I'm using the same shade and applying it on my lips। Can you all see the formula? It is so beautiful, it is super pigmented, just one swipe is more than enough, and the shades are really beautiful। अगर आप लोगों को इसके shades अलग से देखने हैं, दोनों the nude and the darker shades, तो definitely आप comment करना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। And now for the lashes, I'm going to use this Maybelline mascara. This is one of the best beginners mascara, and also for the people जो daily mascara लगाते हैं but उसको washable चाहिए, तो this is the washable mascara and it is amazing। All I can tell is it is beautiful, it gives you a lot of length, it gives you a lot of volume, separates your lashes so evenly। एंड आप लोग खुद डिफरेंस देख लेना। I'll just show you all the difference between both the eyes। Can you all see this? इस आंख में देखो and this आंख में देखो, there is so much of difference। And now for the highlighter, I'm gonna use this Master Chrome from Maybelline again in the shade Molten Gold। This is a beautiful highlighter, one of the best highlighter। Love both the shades, the rose gold one and this molten gold। They are beautiful, super pigmented, buttery soft। It's like जितना भी मेकअप कर लो but without the glow everything looks incomplete।
you need to have that natural glow first, that is by prepping your skin, and ऊपर से ये highlighter which is going to give you that beautiful glow for the whole day, and your skin is going to look so juicy when blended everything together. This looks so beautiful. This is one of the natural makeup I have ever done, and this is my most go-to makeup. कहीं पे भी जाना है, I have to just use all these products and I get ready in just 10 minutes, and you all can see the final look. If you're wearing a western, then you can just stop here, but in case you are wearing an Indian or any ethnic dress, you just need to add a bindi. And now I am using a kajal. This is from Faces Canada. This is a beautiful pigmented kajal. Just one stroke or one swipe is enough, and you all can see that jet black smudge proof kajal. This is a beautiful, super pigmented and one of my favorite kajal. Instantly you all can see that the eyes look so much brighter, and if you're wearing anything ethnic, definitely a kajal is required, and that's how you look even more beautiful. And I'm using the same lipstick and just applying it below the kajal to give that smudged kind of blended look. तो इससे आपको मालूम ही पड़ता है कि I don't carry my eyeshadow many a times. I just have to carry this Rene lipstick and just do my eyes with this, and this looks so beautiful. Can you all see this? ये काजल इतने अच्छे से smudge हो गया है, but yet giving me that as if I've used eyeshadows and brushes and wo wala look. And now just adding a small bindi as I have an kurti worn, and that's it. This is how you can achieve a simple Indian makeup look, or a very simple elegant makeup where your skin is looking so much glowy, juicy, healthy and amazing. I hope this video was helpful, and guys, if you liked today's video, don't forget to give a like, share to your family and friends, and also follow me on my Instagram. Bye bye.